नमस्कार दोस्तों। आज हम मेट्रो ब्रांड्स का स्टॉक रिव्यू करेंगे। तो मेट्रो ब्रांड्स जो है इट्स द लार्जेस्ट ब्रांडेड फुटवेयर कंपनी इन इंडिया। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 31,000 करोड़ का है। और फ्रैंकली स्पीकिंग ये कंपनी मेरे वॉच लिस्ट में फीचर नहीं कर रही थी। इट्स बिकॉज ऑफ मेनी ऑफ यू हु हैड रीच्ड आउट टू मी टू गेट दिस काइंड ऑफ स्टॉक एनालाइज्ड। आई रेड अबाउट दिस कंपनी, राइट। काफ़ी फेमस कंपनी, इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी फेमस है। फ्रैंकली स्पीकिंग इसके ब्रांड्स जो होते हैं, इंडिविजुअल ब्रांड्स, फुटवेयर के ब्रांड्स है, वो काफ़ी फेमस है, राइट। एंड मैं कहीं ना कहीं समझ सकता हूँ कि बिकॉज ऑफ द stimulus that is given in the budget for footwear manufacturing and consumption push जो आएगा एक तरह से budget की वजह से, right? Many people would be thinking that the footwear sector or a very good brand in the footwear sector could be one of their investments, right? So I would be kind of answering these 4 questions in this video, and for the people who are invested in this company or who would want to invest in this company in the future would find answers to these 4 questions very helpful. I hope so. So what is the guidance that is given by the management? That is the first question that we'll answer. Unlike many companies, the management over here gives a guidance, so we'll kind of spell out that guidance. What are the current trends and consumer behavior in footwear? So footwear एक कंज्यूमर फेसिंग काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट है। इसमें बहुत सारे कंज्यूमर इंसाइट्स चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू एनहांस द प्रोडक्ट सो दैट यू कैन चर्न आउट द इन्वेंट्री एज सुन एज पॉसिबल। तो कंपनीज को एक डिज़ाइन टीम, एक मार्केटिंग टीम की बहुत ज़रूरत होती है फुटवेयर कंपनी, बिकॉज द रिटेल सेक्टर ओवरऑल, एंड यू नीड टू ऑलवेज काइंड ऑफ गेज व्हाट कंज्यूमर इंसाइट्स, व्हाट कंज्यूमर बिहेवियर you could see, so that you can integrate those in your products and sell out your products as soon as possible, right? So the third question is, can Metro Brands leverage the above? Whatever the current trends that we see in the market, whatever the consumer behavior we see in the market, can Metro Brands leverage that into its product, into its operations, right? And finally, जो metrics जो important होते हैं, operational metrics, does Metro Brands kind of outperform its peers in those financial metrics or operational metrics? That is one of the questions that we'll take. And the final question would be definitely about the P. So currently इस कंपनी का जो P है, वैल्यूएशन है, P जो है वो करीबन 75 है. So would we want to pay a P of 75 to a branded player like Metro Brands, which is giving a decent kind of sales and EPS growth? So we look at the sales and EPS growth, right? So answering the first question first, right? What is the kind of the guidance which is given by the management? तो management ने बहुत clear cut कहा है कि a top line of 15 to 18% for the next 2 to 5 years with an EBITDA of 30%, right? तो यहाँ पे मैंने एक basic सा calculation कर दिया है कि if let's say if not 18%, if the company gives a top line of 15%, तो current जो TTM है revenue का करीबन 2448 crores है. If the company gives a sales growth of 15%, the management ने 15 to 18 कहा है, but मैंने 15% लिया है. If the sales growth of this company is 15% CAGR for the next 2 years, then the revenues after 2 years would be around 3237 crores, right? इसका मैंने अजम्पशन लिया है नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज़ 18%, क्योंकि मार्च 2024 की जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो 18% है. तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि कंपनी विल स्टिक टू द नेट प्रॉफिटेबिलिटी. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आई हैव अज्यूम दैट 18% प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, तो पैट वुड बी 583 crores, right? The second assumption which I've taken is the number of shares would be the same. So this company does not have the history of equity dilution, and I'm assuming that even in the next 2 years the company won't dilute equity, so the number of equities would be the same, right? So EPS अगर calculate करना है 2 साल के बाद का, you divide PAT by total number of shares and then you get an EPS of 21, right? The current EPS is 15.1, right? Current जो TTM EPS है पिछले 4 quarters का, it's 15.1. So the EPS growth for the next 2 years at a CAGR basis, a compounded basis, is 19%, right? So this is what one could expect if the company grows at 15% revenues or sales growth. तो करीबन 19% का EPS growth दिख रहा है यहाँ पे, right? तो if you look at the last 3 years, 5 years, 10 years data, तो मैं कहूँगा कि 3 साल का डेटा जो है उतना उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कोविड का जो पेंट अप डिमांड का डेटा कैप्चर हो रहा है. सो द 3-year डेटा फॉर द कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एज वेल एज द कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, आई डोंट थिंक सो इट्स कॉन्सिक्वेंशियल. वी शुड जस्ट अवॉइड दिस डेटा. पिछले 5 साल का जो डेटा है
the compounded sales growth is 14%. तो हमने करीबन 15% लिया, मैनेजमेंट ने 15 to 18% का. So 13%, 14% is the right kind of sales growth that we could attribute to this company. पिछले एक साल की हालत तो काफ़ी खस्ता है, 6% से ग्रो हुआ है. So I think this is temporary, this is more of a cyclical kind of a change, but ये कंपनी जो है वो 13 से 15% ग्रो होने वाले सेल्स ग्रोथ की कंपनी है, राइट? तो प्रॉफिट ग्रोथ इफ यू सी अगेन वी कैन जस्ट अवॉइड द 3-year कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, बट अगर आप पिछले एक साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 26% है, पिछले 5 साल का 23% है और पिछले 10 साल का 18% है. सो वट एवर EPS ग्रोथ दैट वी कैलकुलेटेड ऑफ 19%, आई थिंक इट्स अ फेयरली डिसेंट EPS ग्रोथ for the company to kind of achieve in the last in the next 2 years, right? अगर आप इस क्वार्टर का भी डेटा देखोगे, पिछले क्वार्टर्स में Q3 में, तो यहाँ पे sequential would be a better metric than year on year. Sequential is nothing but comparing December 2024 to September 2024, right? तो 20% sales growth से increase हुआ है क्योंकि दिवाली दशहरा था तो लोगों ने फुटवेयर खरीदा होगा, जूते चप्पल अच्छे खरीदे होंगे, राइट? तो ऑपरेटिंग ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है, राइट? पैट ग्रोथ 31% है और EPS ग्रोथ 35% है. अगर आप वाई टू वाई डेटा देखोगे तो थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, बट पिछले साल हालत काफ़ी खस्ता थी पूरे सेक्टर की, इन्वेंट्री काफ़ी बिल्डअप हो गया था, तो वो इन्वेंट्री जो क्लियर अप होना था वो हो चुका है पिछले एक सालों में. बट वील जस्ट लुक एट द वाई टू वाई डेटा एज वेल. तो सेल्स ग्रोथ सिर्फ 10% का था, मिजरेबल सेल्स ग्रोथ है, राइट? ऑपरेटिंग ग्रोथ करीबन 13% का है, राइट? एंड इफ यू सी द आई जस्ट हाईलाइट दिस, तो हाँ, तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ जैसे मैंने बताया कि करीबन 10% का है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इट्स बीन अराउंड 13%. नेट प्रॉफिट पे नेगेटिव रहा है कंपनी, and EPS growth भी -4% कर रहा है. So this quarter, the previous quarter which went by Q3, if you compare it with March 2023, the numbers look really miserable. But if you compare it with September 2024, then we see hope and we see demand in the numbers, right? तो वैसे ये मेट्रो ब्रांड्स, ये जो कंपनी है, काफ़ी एक स्टेबल स्टेडी स्टेट कंपनी है. इट्स एन एस्टैब्लिश्ड कंपनी है जिसने अपना बिजनेस मॉडल प्रूव कर दिया है. तो इससे एक तरह से कोई ऐसे रातों रात अमीर या रातों रात गरीब नहीं बन सकता. इट इज़ फॉर इन्वेस्टर्स हु वांट टू इन्वेस्ट इन स्टेबल कंपनीज, जो एक बार पैसा डाल देते हैं और फिर रोज़ जिनकी आदत नहीं होती कि एप्लीकेशन खोल के देखे कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, कितना स्टॉक प्राइस ऊपर गया है, कितना नीचे गया है. सो इट्स अ फेयरली स्टेबल कंपनी. अगर आप इसका स्टॉक प्राइस भी देखोगे, राइट, पिछले 5 साल का स्टॉक प्राइस है ये. इन द लास्ट 5 years इट हैज़ grown in a very stable sustained manner. थोड़ा अभी पिछले एक साल में थोड़ा हालत खस्ता थी तो साइडवेज मूवमेंट हुआ, बट अगेन इट्स अ वेरी स्टेबल कंपनी. कोई स्टेडी स्टेट कंपनी है, कोई रातों रात अमीर नहीं बनेगा, कोई रातों रात गरीब नहीं बनेगा, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए इस कंपनी को खरीदने की आज कल परसों में. वन कैन टेक इट्स ओन टाइम एंड बाय दिस कंपनी, राइट? तो it is for long-term investors who want to stay invested in a reputed brand. कोई अगर EPS growth 18-19% से दे रहा है और आपका निफ्टी अगर 10-12% से predictably grow हो रहा है अगले 2 साल में, then better returns could be got into this kind of a mid-cap stock rather than investing into Nifty, which will give you very, very slow and sustained returns, right? So that extra 6-7% is something which you can get from investing in these kind of companies, right? तो काफ़ी if you look at the company as well, it's a very stable company, self-sustainable business model है company का, right? Return on capital employed in the last 5 years is around 19%, fairly decent है. अगर management 100 rupees अपने business में लगा रहा है तो उसको 19 rupees का या 19% का profit पिछले 5 सालों में साल दर साल हो रहा है. It's a fairly decent thing. Return on equity is 21%, right? What is a great return on equity? 25% plus is a great return on equity. What is a decent return on equity? 20 plus is a decent return on equity, right? तो किसी इन्वेस्टर ने या इक्विटी इन्वेस्टर ने या फिर इक्विटी जिसने लगाई है इस कंपनी में 100 रुपए की, तो उसको 21% का एक तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ है पिछले 5 साल का, which is a fairly decent return on equity, right? Consistency of returns is something which gets reflected in the return on equity, and these two metrics, ROC and ROE, are long-term sustainability, long-term profitability metrics. So fairly decent kind of sustainability which you see in this company. If I have to compare it with the peers as well, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे Relaxo has a return on equity of 14%, Bata has 11%, Bata थोड़ा कमज़ोर है, Campus और Metro जो है वो 20% return on equity देते हैं पिछले 5 सालों में, right? तो अगर मैं सेल्स ग्रोथ की भी अगर बात करूं तो रिलैक्सो का फ्लैटिश सेल्स ग्रोथ, बाटा का फ्लैटिश सेल्स ग्रोथ था, कैंपस 8% से ग्रो हुआ, मेट्रो 6% से ग्रो हुआ.
प्रॉफिटेबिलिटी वाइज अगर आप देखोगे तो रिलैक्सो वाज अ नेगेटिव। रिलैक्सो बेसिकली मास सेगमेंट को टारगेट करता है, राइट? तो जो मास सेगमेंट या मास, एक तरह से मास सेगमेंट था, उसकी हालत काफ़ी खस्ता थी पिछले 1-2 सालों में, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ बैलेंस शीट्स, हाउस होल्ड बैलेंस शीट्स अंडर लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज द डेट दैट दे हैड टेकन। तो एक तरह से पिछले जो बजट में रिलीफ दिया गया है, तो रिलैक्सो को इसका बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। बट इफ यू लुक एट बाटा एंड कैंपस, तो इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 25% प्लस प्रॉफिट ग्रोथ है, विच इज डिसेंट। मेट्रो का भी करीबन 26% प्रॉफिट ग्रोथ था, राइट? तो इफ वन हैज टू सी द वीकेस्ट इन ऑल दीज 4 कंपनीज इज रिलैक्सो, फॉलोड बाय बाटा, एंड कैंपस एंड मेट्रो थोड़ा एक तरह से टाई हो गया इन दोनों के बीच में। बट कमिंग बैक टू मेट्रो ब्रांड्स, अगर आप देखोगे इट्स अ फेयरली स्टेबल कंपनी। CFO टू EBITDA 0.6 है, थोड़ा कमजोर हुआ है। नॉर्मली अ डिसेंट CFO टू EBITDA इज कंसिडर्ड टू बी 0.8, बट इसका 0.6 है बिकॉज पिछले 1 साल में काफ़ी इन्वेंट्री डाइल्यूट करनी पड़ी, डिस्काउंटिंग देकर इन्वेंट्री एक तरह से डाइल्यूट करनी पड़ी है, तो उसकी वजह से थोड़ी हालत खस्ता हो गई यहाँ पे। इट्स अ फ्री कैश फ्लो कंपनी, तो अगर CFO टू पैट, सॉरी, CFO माइनस केपेक्स इज द फॉर्मूला फॉर फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो इज नथिंग बट कंपनी को एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ कैपिटल की इतनी ज़रूरत नहीं है। वो अपना खुद का जो ऑपरेशन है, अपना केपेक्स है, वो खुद अपने पैसों से एक तरह से अपने जो भी कैश फ्लोज आते हैं उनको सस्टेन करके, उनको एक तरह से अब्जॉर्व करके अपना बिजनेस ग्रोथ लेके आ सकती है, राइट? तो फ्री कैश फ्लो, FCF पॉजिटिव कंपनी है। री इन्वेस्टमेंट रेशियो भी काफ़ी सही है, 79% का है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंपनी इज अर्निंग 100 रुपीज फ्रॉम इट्स बिजनेस, देन इट इज री इन्वेस्टिंग 79 रुपीज अगेन इन टू इट्स बिजनेस, राइट? जो बाकी का 21 रुपीज होता है वो थोड़ा सेविंग्स में चला जाता है और डिविडेंड पे आउट में चला जाता है, राइट? तो इट्स अ फ्री कैश फ्लो कंपनी एंड द री इन्वेस्टमेंट रेट इज 79%, राइट? ये कंपनी एक एसेट लाइट कंपनी है। भले आप जब इसका फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा दिखता है, 42% दिखता है। मैं इसको एसेट लाइट कंपनी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इट आउटसोर्सेज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स शूज, राइट? तो इस कंपनी का जो कंपिटिटिव एडवांटेज है, जो मोट है इसका, इट इज़ एक्चुअली इन द डिज़ाइन। तो इनके डिज़ाइंस जो होते हैं वो नेक्स्ट लेवल डिज़ाइंस होते हैं, राइट? बट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ये आउटसोर्स करते हैं। करीबन 250 वेंडर्स को एक तरह से इन्होंने आउटसोर्स किया अपनी मैन्युफैक्चरिंग। तो ये फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट जो 42% का दिख रहा है, वो इतना हाई क्यों है इफ द कंपनी इज आउटसोर्सिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस? बिकॉज द कंपनी हैज एक्सक्लूसिव प्लान्ड आउटलेट्स, राइट? तो ये मॉडर्न ट्रेड, सॉरी, ये जनरल ट्रेड के थ्रू काम नहीं करती है। तो अगर आप इनके ब्रांड्स देखोगे, राइट, मोची फॉर एग्जाम्पल, फीला, FILA, फीला, क्रॉक्स, ये जो इनके जो प्रोमिनेंट ब्रांड्स है, इनके खुद के एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट्स होते हैं। ये किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अपना इन्वेंट्री पुश नहीं करते, राइट? तो अगर इनके आप ब्रांड्स भी देखोगे या फिर इनके आप आउटलेट्स भी देखोगे तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड आउटलेट्स है। दे आर इन 192 सिटीज इन इंडिया, राइट, विच इज़ लाइक फेली डिसेंट। करीबन 250 282 आउटलेट्स हैं इनके, और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड आउटलेट्स है। तो ये ब्रांड जो है, इट्स अ प्रीमियम ब्रांड, इट्स अ मास प्रीमियम ब्रांड। तो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड आउटलेट्स होते हैं और इन्वेंट्री पूरी स्टैक करनी पड़ती है, राइट? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे रिसीवेबल्स डेज यहाँ पे कम है कंपनी का। इफ लुक एट द रिसीवेबल डेज ओवर ईयर, इट्स 18 days, 12 days, right? But inventory days आपका बहुत ज़्यादा है. Inventory days is 274, 276 because the inventory is completely stacked in the exclusive business outlets, right? तो खुद का outlets है, खुद manufacturing नहीं करती है. Design is the moat over here, and they stack their inventory in their own outlets, right? ये प्रीमियम ब्रांड है, एक मास प्रीमियम ब्रांड है. तो इक्विटी बोल रहा हूँ, जो इन्वेंट्री होता है उसको लिक्विडेट होने थोड़ा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू लेट्स से रिलैक्सो विच इज मोर ऑफ अ मास सेगमेंट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, राइट? तो दैट्स व्हाई यू सी द रिसीवेबल डेज आर रियली लो, क्योंकि खुद के ब्रांड्स, खुद के ब्रांडेड आउटलेट्स में अपनी इन्वेंट्री रखी जाती है. थर्ड पार्टी ब्रांडेड आउटलेट्स में इन्वेंट्री नहीं रखते हैं तो कुछ ट्रांजैक्शन का कुछ इशू होता ही नहीं है, राइट? तो so the kind of what you can expect from the EPS side is around 18 to 20% kind of a growth if things actually improve after the budget, right? So what are the current trends and consumer behavior in the footwear segment, right? तो अगर आप देखेंगे बहुत recently people have multiple footwear for multiple occasions. तो पहले अगर आप देखते थे तो एक फॉर्मल ऑफिस के लिए लोग अपना एक फॉर्मल फुटवेयर रखते थे एंड कैजुअल के लिए एक जोड़ी चप्पल रखते थे. बट अगर आप अभी देखोगे, देर आर कंज्यूमर्स हु हैव मल्टीपल पेयर्स ऑफ फुटवेयर फॉर मल्टीपल ओकेजन्स. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ वन गोज टू जिम, you have a different set of footwear, you have a different another set of footwear for let's say
if you want to hang out with friends, or office के लिए अलग होता है. There are multiple pair of footwears that people have right now. Casualization बहुत हो चुका है footwear का, right? So multiple pair of footwear that people have, right? People prefer, or consumers prefer, a branded outlets as the experience is better. That is something which we have seen. Normally जो online push जो है वो इतना strong नहीं है footwear में जितना strong है apparel में. तो people prefer going to branded outlets and experience the product before they buy it, right? तो अगर आप ये दो points का relevance देखोगे तो Metro Brands has very well leveraged these two things because it has an exhaustive product catalog, right? इनके खुद के products होते हैं, Metro, Mochi, Walkway and Proline, right? आप इनके stores देख सकते हो. They have tie-ups with international brands like Crocs and Fila, premium brands है, सब premium mass premium brands है, and then they sell third party brands like Skechers and Campus as well. तो Campus के भी जूते एक तरह से जोड़े जाते हैं इनके exclusive business outlets में, and around 27% of their sales come from these two categories, the tie-ups that they have with international brands and selling third party brands like Skechers and Campus. So it's an exhaustive product catalog, right? For example, आपका Mochi जो है formal shoes होते हैं एक तरह से, Crocs जो होते हैं महंगे casual trendy shoes होते हैं इनके, right? Fila, if I'm not wrong, is sports shoes, right? So you'll see all these outlets in the malls if you kind of visit the malls, right? तो ये काफी famous brand है, right? Secondly, अगर आप देखोगे, they sell exclusively to Metro brand outlets, right? They do not sell through third party. तो इनका जो पूरा control जो है customer experience पे वो बहुत strong है as compared to companies like Relaxo, which actually sell through general trade, right? तो Bata के भी खुद के stores होते हैं, Coco होता है company owned, company operated. Similarly, Metro brands के भी खुद के stores होते हैं, company owned, company operated, right? तो the third point is the replacement cycles have gone down, especially in the mass segment, right? So this is something which will benefit Relaxo a lot, right? क्योंकि जो replacement cycles है, मतलब पहले अगर समझो जूते 3 या 4 साल के लिए लोग पहनते थे, आप सिर्फ 1 साल के लिए पहनते हैं और फिर उसके बाद नए जूते एक तरह से लेके आते, राइट? सो दिस इज समथिंग which is very helpful in the mass segment, not very much in the premium or mass premium segment, right? So the preference right now is casual, trendy and branded products, right? So this is the kind of products that a lot of millennials, Gen Z kind of wear, right? The major themes that are going to see are women, sports and casuals, right? Women, because the disposable income at women's end is increasing, larger women in the workforce. That's why there's a lot of uptick in the women market. So this company ka Metro Brands ka jo highest, it has the highest share in the women kind of segment with 41%, right? And it comes up with really good products for women, and it's going to capture more market share as things go forward, right? अगर आप दूसरा देखेंगे, इसका जो कैटलॉग होता है ये काफ़ी एक प्रीमियम कैटलॉग होता है मेट्रो ब्रांड्स का, राइट? सो 59% ऑफ द सेल कम्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स विच आर प्राइस्ड more than 3,000. तो ये एक प्रीमियम ब्रांड है. 37% इट्स बिटवीन 15,000 मैंने लिखा है, बट इट्स 1,500 to 3,000, एंड इट्स ओनली 13% विच गेट्स काइंड ऑफ लिक्विडेटेड for a price point of 1,500 or low. तो करीबन 60% products जो है करीबन 3,000 से ज़्यादा प्राइस होता है, right? So it's a premium, it caters to a premium or a mass premium kind of TG, right? So sector growth is 15%. So footwear sector is growing at 15%, and the branded market has increased to 45% in the last 4 years from 32% that it was in 2020. So branded footwear, aspirational brands की एक तरह से काफ़ी ज़्यादा products की काफ़ी ज़्यादा मांग है, right? So this company is the largest footwear brand in market capitalization wise. 31,000 crore का market capitalization है. Volume growth is 12%, which is same as Campus, something which we discussed. Bata and Relaxo का एक flattish growth है. Store addition जो capex हो रहा है करीबन 12% से हो रहा है, काफ़ी धीमे हो रहा है, अच्छे से हो रहा है. करीबन 856 stores है in 192 cities. It's not 1902 cities, it's 192 cities, right? इस कंपनी का जो net profitability margin है वो सबसे highest है, right? तो अगर आप इस कंपनी का operating profit margin देखोगे, right? So operating profit margin has been expanding in since the last couple of years. अगर आप operating profit margin देखोगे तो operating profit margin काफ़ी सही है, 25-30 के टेरिटरी में, राइट? जबकि फुटवेयर एक बहुत competitive मार्केट है. तो अगर ये कंपनी 30+ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन
रखती है और इसमें कोई सिक्लिकलिटी नहीं होती, ये स्ट्रक्चरली ग्रो हो रहा है एक तरह से। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है, राइट। सो इट मेक्स डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स जो काफ़ी महंगे होते हैं, प्रीमियम सेगमेंट को एक तरह से बेचती है कंपनी। एंड it is very clearly evident from the operating profit margin that this company has pricing power. Operating profit margin fluctuate नहीं कर रहा है। अगर fluctuate करता या फिर decrease होता या फिर contract करता तो मैं बोलता कि कंपनी के पास इतना ज़्यादा pricing power नहीं है, राइट। नेट प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी की करीबन 18% है, राइट। नॉर्मली अ गुड प्रॉफिटेबिलिटी इज समवेयर मोर देन 10%, तो ये एक डिस्क्रिशनरी ब्रांड है, तो 18% इज समथिंग विच इट कैन डिलीवर ऑन नेट प्रॉफिटेबिलिटी। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है नेट प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी, राइट। तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की 18% है, बट उनके जो एसेट टर्न्स है वो थोड़े कमज़ोर है। इसके वजह से द रिटर्न ऑन इक्विटी इज 20 एंड नॉट 25, right? So return on equity is nothing but a function of your asset turns multiplied by net profitability. So net profitability पे तो outperform कर रही है, but asset turns है जो थोड़े average है, right? तो इसकी वजह से आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, 25% नहीं है, राइट। एफिशिएंसी पैरामीटर पे कंपनी का जो हाईएस्ट एफिशिएंसी पैरामीटर पे कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। योर रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी पैरामीटर, कि आपने अगर दुकान ली है, राइट, उसको उस दुकान से हाउ एफिशिएंटली आर यू कन्वर्टिंग द एसेट्स that you have into revenues, right? तो highest revenue per square feet है इनका 18,000. It's a market leader in that. दुकानें काफ़ी छोटी होती है और काफ़ी well designed होती है. That's why it attracts a lot of people and people end up buying stuff in those stores, right? But इसका जो average inventory turns है वो थोड़े कमज़ोर है, which I had explained. They had to stack up all the inventory. तो receivables is on the lower side, but inventory days is on a higher side. तो the fact that they stack up all the inventory that they manufacture, inventory turns जो है वो थोड़े ज़्यादा इस पे, so they kind of outsource to 250 vendors. They have a manufacturing base of 250 vendors manufacturing something which they do not do. Competitive advantage in design is their mode. That is completely understandable, and this company has pricing power in a highly competitive market. This is something which we discussed. The operating profit margin kind of expands and not contracts, and the operating profit margin is above 20, in the range of around 25 to 30%. So will I pay a PE of 75 to get into the stock? No, I will not pay a PE of 75 to get into the stock, because normally if I'm expecting an EPS growth of 19%, let's say in the best case scenario the EPS growth would be 25%, I would rather pay a PE of 2.5x for the EPS growth of 20% to kind of get into the stock. ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, right? Even if you look at the peers over here, Relaxo का PE तो 63, समझ में नहीं आता 63 का PE कैसे मिल रहा है इसको। Bata का 47 है, Campus is somewhere in the league of Metro, तो Metro का 77 है. I would not pay a PE of more than 2.2 or 2.5x than the EPS for a consumer company over here, right? So this was a brief about Metro Brands. Hope you liked the analysis. If you have, please like and share this analysis, and please follow this channel for more such analysis. This is not a stock recommendation, guys. Please do your own research.